Yesterday we have discussed about the mechanical instrument for the research. There are two methods. One is questionnaires and other is mechanical. In mechanical, I have mentioned you about how to find out the opinion or ideas of your consumer or customer of pharmaceutical product. So we can show the ad and see the ECG, MRI, blood pressure, respiratory rate, sweating level, facial expression, eye movement. This is all mechanical. This is the last slide for that chapter. Now we will start the new chapter, new topic. Evaluating opportunity in marketing. Evaluating opportunity, changing market environment. What do we understand by marketing environment? Means we are doing a business and we have got two type of surrounding. One is internal and one is external. Internal is known as macro environment and outer is known as macro environment. So context of marketing, objectives and resource of the firm. First of all, we will see the external environment, which is competitive, social and cultural influence, technological changes in the market, economical boom or recession, political or legal aspects. Internal environment, we will go to see the product, promotion, price, place, and which is surrounding the customer. This is two environment. One is external, one is internal. Competitive environment means basic market type. Pure competition. Oligopoly means there is no competitor. Monopoly, only one in the market. Pure monopoly, many competitors are there. Then we go for the competitor analysis and competitive barriers. So one by one, we'll see the pure competition means it's a free market. Anybody can enter into the market and he can compete with your organization. Oligopoly means there is no competitors there, and even there is no monopoly. Monopolistic competition means only one competitor which is in the market and he won't allow any other competitor to enter into the market. Pure monopoly means you are providing opportunity for the different organization to come into the market and introduce their product or brands. Then we go for the competitor analysis and competitive barrier. Competitor analysis means you have to see the competitor financial strength, technological strength, political strength, social strength, and other different type of strength. Then competitive barriers. Competitive barriers means how the competitor can produce hurdle during your commercial activities and other activities. Social and cultural environment. Culture is a society, personality. Culture value change, but usually slowly. Social and cultural environment play a major role in determining what constitutes ethical and unethical behavior. Means the culture, for example, in Saudi Arabia or in the United States, there are a lot of difference between the culture. If in the ad, if they are showing some advertisement in which there is a nudity, they allow for that. But in Muslim countries, it is not allowed, especially in Saudi Arabia and other part of the Muslim. For example, Afghanistan or Taliban region will not allow anyone to make an ad of their product or brand which is against the Sharia. Technological environment, 90% of all scientists who ever live are alive today. The application of high tech to consumer product is a major trend in product development. To create innovation and creativity in a product, you need a technology, and that technology comes from the scientists. Slide rule versus programmable calculator. Early computer versus PC and laptop today. This is all change of technology. Technological environment is changing day by day.
Economical environment. Economic changes can occur very rapidly. Impact of consumer will change. Inflation, increase interest rate, interest rates, exchange rates. This all affect on the economical environment. Today in Pakistan, the dollar is about 169 rupees last night, highest level of a dollar. So our currency value has been gone down. Impact on consumer will change. Yes, there is an inflation rate, he cannot purchase. Interest rate decreases, he cannot save the money. Exchange rates of dollar and rupees is higher, so it's difficult for anyone to import their products. Business cycle. Recurring fluctuation in economical activities, spending, output, and employment. We'll see the three impacts. Recurrent fluctuation in economical activity. Sometimes more activity, sometimes less activity, due to the economical recession or boom. Depression in economy, then recovery, then prosperity, then recession, then depression, then recovery. In that way, the cycle, business cycle, go up and down with the different times. Political and legal environment, federal, state, and local political and legal environment affect marketing, means the rule and regulation of the government, when to open, when not to open, close, work for 5 days, not work for 5 days, work only for 3 days, 2 days off, all the business are closed due to the COVID or any other political turbulence, religious turbulence, economic turbulence, technological turbulence. There are a lot of things. Local political and legal environment affect marketing. Political movements, nationalism, consumerization, impact marketing opportunities. These are all factors which affect on the business. History of government regulations, because government is a major player in all business. Anti-monopoly period of early 20th century, Sherman Act, Clayton Act, FTC Act. These acts have been introduced into the market to follow the government rule and regulation. Monopoly, they have introduced the two name of one rule, antitrust law or deregulation, we call it. Great Depression period aimed at protecting competitor. Robinson's Batman Act, unfair trade laws. In this condition, they have introduced two laws. Regulation aimed at protecting consumer, Pure Food Drug Act, Fair Packaging, Labeling Act, Consumer Product Safety Act. Most recent phase aimed at deregulation, certain industries, Staggers Rail Act, Airline Deregulation Act, DIDMC Act. These are all different acts introduced by the government. Now we talk about the strategic planning tools, BCG matrix. Strategic planning and planning is different. When you call planning, planning means simple formulation. When you say strategic planning, strategy is a roadmap which gives you the direction to reach your destination and obtain your goals and objectives. Objectives are of two types, qualitative and quantitative. This is the definition of strategy. So first of all, you have to understand what is strategy. What is strategy? It's a roadmap.
which help you to reach your destination. When you reach your destination, what is your objective? To obtain your goals and objectives. And objectives are of two types, qualitative and quantitative. Means how much and how well you obtain your goals and objectives. When we do the business, we go for the BCG matrix. It's an analyzing tool for your products. How many products are star, how many products are cash cow, how many products are question mark, and how many products are dog. So we compare two things here. Market growth, how the market is growing from low to high, or relative market share from high to low. For example, if we label our brand or product as a star, it means our market growth is very high and our relative market share is also very high. It means it's a new product. At the start, he has achieved maximum targets. That's why it is known as star. But because this is just starting, means achievement is there, higher achievement is there as compared to zero, because this product has started from the zero. For example, from the zero, this brand has jumped to 20 million, 30 million, maybe in first month. The market growth is high. The market share is also very high. But if you observe the second cow, we call it cash cow. But here you will observe that your brand is high in relative market share, means it is taking very high share from the market. For the JSK, JSK is about 48 billion rupees per annum from the market. And if you compare with other organizations like Sami and other pharmaceutical company, they are about 23, 27 billion rupees per annum they earn. So cash cow means relative market share is very high, but the growth is low. Here you have to compare or understand why the star is high and why the cash cow, when cash cow is getting more and more share from the market, why it is low. Because the base of the cash cow is not in billion, but it is in trillion, for example. So the growth of trillion, 1% is more than the 50 billion growth of 20%. So in that way, because the cash cow is at the maturity, when we will go through the life cycle of a product, we'll see, but the star is at a initial stage. Now we come to question mark, whether to keep this product in your portfolio or throw it out because it is not giving proper response. Either you invest on that product, promotional investment, or take it out from the market. Then, because the question mark has a high growth but low in market share. इसके एग्जाम्पल ऐसे, एक बच्चा है बहुत लंबा हो गया मगर कमजोर है, ठीक है ना, और स्टार का यह है कि बच्चा सेहतमंद भी है और जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, मगर बच्चे की जो ग्रोथ है वो जिस स्पीड से बढ़ रहा है अपने सराउंडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है जो उसके कॉम्पिटिटर है, मगर कैश काउ जो है वो चूंकि इनिशियल स्टेज, ग्रोथ स्टेज, और इस पर तो मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है, तो उसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल दिया जेएसके, जेएसके जो है मार्केट शेयर में 48 बिलियन रुपीस कमाता है सालाना। ये आपका जो 2020 का जो क्वार्टर है, 2021 का जो क्वार्टर है, ये चौथा क्वार्टर चल रहा है अभी, इस क्वार्टर की जो सेल है इसकी बहुत ज्यादा है।
डॉग का मतलब है कि मार्केट शेयर भी लो ले रहा है और मार्केट ग्रोथ भी लो ले रहा है, तो इसका जो पीसीजी का जो मालिक है वो कहता है कि किल द डॉग, क्योंकि ये आपके रिसोर्सेस खा रहा है और प्रॉफिट नहीं दे रहा है। क्वेश्चन मार्क पे ये है कि अभी ये ग्रो तो कर रहे हैं मगर कमजोर है, दे देगा प्रॉफिट अगर आप इसमें मेहनत करें। और कैश काउ जो है, कैश काउ जब भी बेचेंगे पैसा मिलेगा आपको। और स्टार जो है इनिशियल स्टेज में है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सो दिस इज द वे हाउ टू एनालाइज ऑन द पीसीजी मैट्रिक्स। Strategic planning tools, GE matrix. In this, we follow two things. Industry attractiveness means आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, एंटीबायोटिक पे करें या फार्मा इंडस्ट्री है, यकीनन इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। बोटैनिक्स में करें, ऑन्कोलॉजी में करें, कोविड पे करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। और बिजनेस स्ट्रेंथ, लो मीडियम एंड हाई, लो मीडियम एंड हाई। तो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान में जी मैट्रिक्स पे आप अपनी प्रोडक्ट को रख के देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट हाई इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस में आती है और हाई बिजनेस स्ट्रेंथ में आती है, तो आपका पहला खाना आएगा। दूसरे में है तो मीडियम में, तीसरे में है तो लो पे आएगा, ये लो में। मार्केट स्ट्रक्चर एंड डिमांड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डिमांड क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हम देखेंगे। मार्केट डील्स विद द फ्यूअर लार्ज बायर्स। इसमें कुछ बायर्स होते हैं, खरीदने वाले होते हैं बड़े बड़े। Market deals with a fewer large buyers. Customers are more geographically concentrated. Demand is derived from the consumer demand. Demand आप कहाँ से लेके आते हैं, तो कंज्यूमर डिमांड होती है, वहां से लेके आते हैं डिमांड। डिमांड इज मोर इनइलास्टिक, फिक्स डिमांड है, वेरिएबल डिमांड नहीं है। परचेज इंक्लूड्स मोर बाइंग पार्टिसिपेंट एंड मोर प्रोफेशनल बायर्स, क्योंकि आपका जो एरिया है वो बहुत ही प्रोफेशनल है। जो भी मेडिसिन को खरीदेगा, फार्मेसी में खरीदे या हॉस्पिटल में खरीदे, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, आप जैसे प्रोफेशनल्स होंगे वो। परचेजिंग इज मोर अ कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है परचेजिंग, हमने डिस्कस किया पीछे भी कि बहुत, और आपकी एक फॉर्मूलरी होती है, उसके हिसाब से खरीदते हैं, उस प्रोसेस से लेते हैं। डिमांड हैज वाइडर फ्लक्चुएशन, कभी डिमांड बढ़ती है कभी कम होती है। बायर एंड सेलर आर मोर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। Place and development of the channel system. Channel distribution. What is channel distribution? Channel distribution क्या होती है? Channel of distribution is the complete sequence of marketing organization involved in bringing a product from the producer to the ultimate consumer or organization user. आप अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के घर तक कैसे पहुंचाते हैं? First, you give your product to a distributor. Distributor will give the retailer. Retailer will sell the
product to the consumer or customer. There is a difference between customer and consumer, customer buy and consumer consume. Channel, manufacturer, producer of a product, right? Wholesaler, intermediary that buy from one party and sell to industrial buyer, non-consumer. मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या चीज? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाता है, बनाने के बाद किसको देता है? डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। और डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेचता है? रिटेलर को। इंटरमीडिएट दैट सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब तो रिटेलर से जाके जो है पर्सन बाइंग फॉर द पर्सनल और हाउसहोल्ड कंजम्पशन, इसको हम कहते हैं चैनल मेंबर्स। तो हु आर द मेंबर्स? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। चलिए इनके एग्जांपल लेते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन है? जीएसके है। इसका होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? फार्मालिंक। रिटेलर कौन है? साइंस मेडिकोस। कंज्यूमर कौन है? मैं और आप। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। चैनल डेफिनेशन, रिटेलर वर्सेस होलसेलर, merchant versus agent intermediary, eliminating the middleman versus eliminating the function. चैनल की डेफिनेशन ये है, होलसेलर रिटेलर को देता है, तो इनके आपस के अंदर जो है बिजनेस चलता है। मर्चेंट वर्सेस जो जिसने बनाया है या मर्चेंट बल्कि जिसने खरीदा है, वर्सेस एजेंट इंटरमीडिएट जो आगे ले जाके बेचता है, वो एजेंट है। एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन, बीच में से आप निकाल दें मिडिल आदमी को, ठीक है ना। होलसेलर को निकालते हैं आप, रिटेलर को निकालते हैं, डायरेक्ट बेच दें कंज्यूमर को। एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन वर्सेस एलिमिनेटिंग द फंक्शन। अब मिडिल मैन बीच में से निकाल दे, डिस्ट्रीब्यूटर निकाल दे, होलसेलर निकाल दे, रिटेलर निकाल दे और उसका काम खत्म कर। चैनल मेंबर फंक्शन, channel member function means breaking the bulk. There is a big bulk produced by the company and they maintain accumulating bulk. Channel member का function क्या है? जो जितनी लॉट बैच बनाया है कंपनी ने, उस लॉट को आप होलसेलर को देते या डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके बाद एक्यूमुलेट कर दें बल्क को, सॉर्टिंग, फिर वो अलग करें, क्रिएटिंग असॉर्टमेंट, फिर अलग अलग रखें वो दवाएं जो भी आ रही हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन, अपने ट्रांजैक्शन को कम करें, ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज करें, सर्विसिंग करें, क्रेडिट पे रिस्क शेयरिंग करें। ये सब चैनल मेंबर के फंक्शन है। रिस्क दोनों शेयर करेंगे। चैनल एग्जांपल ये है, मैन्युफैक्चरर ने बनाया, कंज्यूमर को आपके घर पर लाके भेज दिया। ब्लैक से वेलकम दवा बना रही है और बीच में किसी दवा को किसी को नहीं दे रही है और ये मेडिसिन डायरेक्ट आपके घर पर पहुंचा रही है। इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। दूसरा है प्रोड्यूसर जो है वो रिटेलर को दे रहा है और रिटेलर से कंज्यूमर खरीद रहा है। यानी जीएस के जो है बना रहा है, किसको दे रहा है? दवाओं को दे रहा है, और दवाओं वाले क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर को दे रहे हैं, जो कंज्यूमर खरीदने आ रहा है। तीसरा रास्ता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके होलसेलर को बेच देता है या डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है जिस इलाके का होता है, अगर हैदराबाद का है तो हैदराबाद के जितने रिटेलर है उनको बेचेगा, कराची का है तो कराची के तमाम रिटेलर्स को बेचेगा और वहां से कंज्यूमर खरीदेगा। उसके बाद एक और है
प्रोड्यूसर बनाता है, होलसेलर को बेचता है, होलसेलर दूसरे होलसेलर को बेचता है, और वो फिर रिटेलर को बेचता है, और उसके बाद वो कंज्यूमर को बेचता है। चैनल कोऑर्डिनेशन, channel coordination, conventional channel, vertical marketing system from up to down, corporate vertical marketing system, contractual vertical marketing system, and administrative vertical marketing system. ये कन्वेंशनल ओल्ड स्टाइल है इसका, जो कंटेम्प्रेरी है मॉडर्न जो है वो डिफरेंट है। इसमें हम प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर को लेते हैं। Degree of coordination of marketing efforts high, conventional, contractual, corporate. चैनल कॉर्पोरेशंस, चैनल कॉन्फ्लिक्ट, जब चैनल बनेंगे तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा बिटवीन प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। चैनल पावर, इसके पास इस चैनल का पावर है, प्रोड्यूसर के पास भी हो सकता है, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, और इवन द कस्टमर कंज्यूमर। कोरेसिव पावर, which is aggressive power, which can have even reward power, who can give you some discounts and other things. मुझे रिटेलर के हाथ में नहीं होता है। लेजिटिमेट पावर, this authority has been given to that particular individual, wholesaler or retailer. Export power, अगर वहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं उसको रिजॉल्व करता है वो, तो एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। रिफरेंट पावर, कि आप किसी को रिफर करते हैं, किसी का लिंक भेजते हैं, किसी की रिकमेंडेशन आती है, दैट इज डिफरेंट पावर। चैनल लीडर्स हैव बीन बैकग्राउंड चैनल्स। मार्केट कवरेज, अब मार्केट में अब किसको बेच रहे हैं, वन को, सम को, मैनी, नंबर ऑफ आउटलेट पर एरिया, हर एरिया में आपने कितने आउटलेट्स खोले हुए हैं। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, वन सिर्फ वहीं से होता है। सम सेलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। Ethical legal issues, exclusive dealing, exclusive territories, tying contacts, grey distribution channel. इसमें ethical और legal issues आते हैं। Ethical means morality. What is right, what is wrong, you have to differentiate between them. Legal issues, rule and regulation of the government. इसमें acts आते हैं different. आपको क्या आपको legal authority दी, exclusive dealing, सिर्फ आप ही हमारे प्रोडक्ट लेंगे और आप ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फार्मलिंग जो है वो जीएसके का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सिर्फ वही करेगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। एक्सक्लूसिव टेरिटरीज, पूरा कराची उसी के हाथ में होता है। टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर के तो तमाम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ग्रे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटर जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर सर्विसेज, लॉजिस्टिक कहते हैं किस तरीके से आप अपने गुड्स को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें पहला आता है मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट इनटू द फर्म। आपकी फर्म में जो रॉ मटेरियल वो कैसे उसकी लॉजिस्टिक होती है इंटरनेट। इन प्रोसेस इन्वेंट्री थ्रू द फर्म, आप उसकी इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करते हैं। इंटरनेट स्टोरेज क्वांटिटी अवेलेबल इन योर स्टोर। फिनिश गुड्स आउट ऑफ द फर्म, आप कितनी फिनिश गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूटर को भेजते हैं।
Physical distribution, all activities involved with the efficient movement of finished product from the end of the production line to the ultimate buyer. ठीक है, आपने रॉ मटेरियल से शुरू किया, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग से जब किया तो उसके बाद आपने इन्वेंट्री मेंटेन की, इन्वेंट्री मेंटेन करने का इस इन्वेंट्री से फिनिश गुड निकाल के देन वी हैव मूव इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर, the distributor will move it to the retailer or wholesaler, and from there it will go into the hands of buyers or customers. Logistic management. Procurement means purchasing of the different material for manufacturing product. Material management कहलाता है ये. Transportation, it's inbound. कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के सिलेक्शन में सबसे पहले हम उसके ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं. अगर उसके पास व्हीकल्स हैं जिसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो व्हीकल्स का एक शेड्यूल होगा, वो शेड्यूल के हिसाब से वो टेरिटरी के अंदर जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा. अगर ये टेरिटरीज डिस्ट्रीब्यूशन में उसके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो आपके लिए ये डिस्ट्रीब्यूटर बेकार है. तो सब पहले आप यहाँ पे समझें कि आपके पास जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करें उसका एक क्राइटेरिया बना ले. क्राइटेरिया ये है कि ट्रांसपोर्टेशन उसके पास है या नहीं. क्योंकि अगर कराची में है वो तो उसको कम से कम 6, 7, 8 ट्रांसपोर्ट चाहिए, यानी गाड़ियाँ चाहिए. बिकॉज कराची इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स. हर जोन में जो है रिटेल शॉप्स भी हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे हैं. फिर वी हैव टू मैनेज inventory of retail shop, inventory of distributor, inventory of the manufacturer or producer. The inventory maintain करना लाजिम. If inventory means the available product in your store, when the demand comes from the market, you have to supply immediately. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग्स करते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल होती है हमारे हाथ में. कितना बनाया है, अगर इन्वेंट्री में एक्सेस है तो नहीं बनाएंगे, अगर कम है तो बनाएंगे. मटेरियल हैंडलिंग, रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, या जो फिनिश गुड्स का मटेरियल है वो अवेलेबल है या नहीं है. गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कितना गुड, कितना आपके प्रोडक्ट आ चुका है. फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जब बन चुके हैं उसकी इन्वेंट्री देखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन आउटबाउंड होता है, फिर इसको आप एनएलसी के ट्रक्स पे चढ़ा के भेज देते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर के पास. फील्ड इन्वेंट्री, जब आप फील्ड में निकलते हैं तो वो इन्वेंट्री देखते हैं कि किसके पास कितना आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है. ट्रांसपोर्टेशन इनबाउंड, फिर आप वहाँ से रिटेल शॉप से बाहर के पास चले जाते हैं. Total cost concept of the physical distribution concept. A total cost approach to logistic management require cooperation between channel members. Cooperation between channel members. तो टोटल कॉस्ट जो है आपकी जो आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, लाजमी ट्रांसपोर्टेशन है तो पेट्रोल लगता है. लॉजिस्टिक जब मूव करती है, जब आप उसको लोड करते हैं ट्रक्स में तो उसके लिए लेबर चाहिए होता है. ठीक है. This cooperation is increasingly taking the form of partnership or strategic alliances. तो इसके अंदर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होती है. स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में डिस्ट्रीब्यूटर को कितना माल चाहिए, कितना प्रोडक्ट चाहिए, रिटेलर के शॉप में कितना प्रोडक्ट डालना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को हमें देखना होता है, मार्केट डिमांड हमें देखनी होती है. ठीक है ना. कॉम्पिटिटर के जो डिस्काउंट्स है वो देखने होते हैं. लैंड एंड फेडेक्स, ये 2 एग्जांपल दिए. हमारे जो एनएलसी ट्रक्स वाले जो है ये करते हैं, फोर्सेस के लोग हैं, ये एनएलसी के थ्रू सप्लाई होता है पूरे पाकिस्तान में. कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Customer satisfaction, what do you understand by satisfaction? Satisfaction means expectation. Means if you are paying 100 rupees for a product, you must get a result of 100%. 100 rupees. So satisfaction is the first stage where the customer show that he is satisfied with the product against the price he has given to the marketer. How much more would you be willing to pay to obtain next day delivery for?
How much more would you be willing to pay to obtain next-day delivery for textbook for the semester, or air condition in July, or heater in February? What products would you not be willing to pay extra to obtain next-day delivery? Cost-cutting example: use robotic and automatic warehouse to reduce labor cost. ये ऑटोमेटेड हो गया आजकल वेयर हाउसेस के अंदर, फोक लिफ्टर्स आ गए हैं, वो डब्बे उठा के ऊपर रखते हैं, लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। मॉपिंग की मशीनें आ गई हैं, मॉपिंग करते हैं फ्लोर को, एक आदमी होता है, 10 आदमियों की जरूरत नहीं है, ठीक है। मशीनें आ गई हैं बॉटल्स की फिलिंग के लिए, ऑटोमेटिक होती है, हाथ से नहीं भरना पड़ता। लेबलिंग ऑटोमेटिक होती है, हाथ से नहीं करनी पड़ती। Replace numerous small warehouse with a fewer larger one to reduce inventory carrying cost. छोटे छोटे वेयर हाउस बनाने के बाद एक बड़ा वेयर हाउस बनाइए जिसको जिस पे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अपग्रेड ऑर्डर प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स टू लोअर पेपर हैंडलिंग कॉस्ट। यूज लेस एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन मॉडल टू लोअर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मूव ऑफिसेस प्लांट transportation, move to lower distribution cost, move office plants or warehouse to lower cost location to the lower overhead cost। ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक सिस्टम। लॉजिस्टिक का मतलब मैंने जैसे बताया कि आप उसको इनसाइड और आउटसाइड अपने रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को कैसे पहुंचाते हैं एंड पे। ट्रांसपोर्टेशन इनबाउंड एंड आउटबाउंड, अंदर और बाहर। इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है और रॉ मटेरियल नहीं है तो आप जो है नुकसान उठा लेंगे, क्योंकि डिमांड आएगी, आप सप्लाई नहीं कर सकते। और अगर इन्वेंट्री एक्सेस है तो यू आर ब्लॉकिंग योर रेवेन्यू, जिसपे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने अपना खास अमाउंट रेवेन्यू उस रॉ मटेरियल की शक्ल में ब्लॉक कर दिया है और वो पैसा सर्कुलेशन में नहीं। ऑर्डर प्रोसेसिंग। डिमांड जो आई है मार्केट से, उसको कितनी देर में आप वहां पहुंचा देते हैं, दैट इज नॉट ऑर्डर प्रोसेसिंग। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। आपके पास कैपेसिटी कितनी प्रोडक्ट की कैपेसिटी है स्टोर करने की। मटेरियल हैंडलिंग। आप रॉ मटेरियल को और फिनिश गुड्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव पैकेजिंग एंड कंटेनराइजेशन। कंटेनर्स जो है वो आप कैसे हैं कि बारिश से, धूप से प्रोटेक्ट होते हैं या नहीं, और पैकेजिंग आपकी कैसी है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन मोड। डिलीवरी एट लो कॉस्ट, स्पीड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी रिलायबिलिटी, ज्योग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी, सेफ्टी ऑफ द गुड्स। अब यहाँ एक वर्ड है ज्योग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो है ना टोपोग्राफी कहलाती है। मींस दैट कंट्री इज कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, डिजर्ट्स। इसमें ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होती है। अगर माउंटेनियस एरिया हो तो ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल आती है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें देखनी पड़ती है कि कहाँ हमें पहुँचाना है, किस किस्म का व्हीकल आप इस्तेमाल करेंगे। डिलीवरी लो कॉस्ट में वाटर है, पाइपलाइन है, रेल है, ट्रक है और एयर है। कहाँ से आप डिलीवरी कर रहे हैं लो कॉस्ट में। अगर आप दरिया से भेज रहे हैं, किसी पाइपलाइन के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल होता है, रेल है, ट्रक है, एयर है। स्पीड ऑफ डिलीवरी, एयर है, ट्रक है, रेल है, पाइपलाइन है, वाटर है। डिलीवरी रिलायबिलिटी, पाइपलाइन, एयर, ट्रक, रेल, वाटर। ज्योग्राफिकल, ट्रक है, रेल है, एयर है, वाटर है, पाइपलाइन है। और इस सेफ्टी ऑफ द गुड जो है, पाइपलाइन है, वाटर है, एयर है, ट्रक और रेल। ये सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं जिसके तहत आप ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, पैक्स हैं, कंटेनर्स हैं, फ्लाइट फॉरवर्डर्स हैं, वेयर हाउसिंग है, यहाँ रखते हैं। वेयर हाउसिंग वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन चेन। वेयर हाउस जो है ये डिफरेंट चीज़ है। जैसे अलीबाबा से आप कोई चीज़ मंगवाते हैं पाकिस्तान में, तो वो वेयर हाउस में स्टोर हो जाती है, कराची में, लाहौर में।
ये 4-5 वेयर हाउसेस खोल देते बड़े बड़े सिटी में, और जब आपकी डिमांड जाती तो आप समझते हैं शायद ये चाइना से आएगा या अमेरिका से आएगा, नहीं, यहाँ वेयर हाउस में स्टॉक मौजूद होता है, ऐसे वेयर हाउस करते हैं। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक वेयर हाउसेस, वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजी, कितने वेयर हाउस बनाएंगे, नंबर्स है, लोकेशन है, एंड टाइप ऑफ वेयर हाउस, ठीक है ना, लाजमी है। अगर कूलिंग सिस्टम चाहिए, कोल्ड स्टोरेज के प्रोडक्ट हैं तो कोल्ड स्टोरेज लाजिम होता है, जैसे फ्रूट के लिए होता है, ये वैक्सीनेशन के लिए होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। इन्वेंट्री कंट्रोल है, इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूड्स एक्विजिशन कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट। इन्वेंट्री का भी एक कॉस्ट लगता है, एक्विजिशन कॉस्ट, जो एक्वायर कर रहे हैं, जो मंगा रहे हैं, रख रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट निकालिए, जितने दिन रखेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट, बाहर निकालने के लिए भी कॉस्ट लगेगी, जो लेबर लगाना पड़ेगा आपको। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बैलेंस, अब आप कितनी क्वांटिटी मंगाएं ताकि वो इकोनॉमिकल पड़े, बहुत थोड़ी मंगाएंगे तो दोबारा मंगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट लगेगी, और बहुत मंगाएंगे तो वहाँ पे बल्क स्टोर हो जाएगा और आपका रेवेन्यू ब्लॉक हो जाएगा। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन होल्डिंग इन्वेंट्री इन स्टॉक एंड द कॉस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीऑर्डरिंग इन्वेंट्री। इकोनॉमिक और ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है ये, द बैलेंस है, बैलेंस द कॉस्ट इन्वॉल्व इन होल्डिंग इन्वेंट्री, कितनी देर तक रखेंगे आप माल अपनी जगह पे, अपनी दुकान पे या अपने वेयर हाउस में, इन स्टॉक, एंड द कॉस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीऑर्डरिंग इन्वेंट्री, वो दोबारा रीऑर्डर करने के लिए आपकी क्या कॉस्ट आएगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन यूनिट्स, इसका एक फार्मूला √2 RS/C। आर का मतलब है एनुअल रेट ऑफ यूजेज, कितनी डिमांड है, कितना यूज कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एस I is equal to annual inventory carrying cost as a percentage of the produce cost or cost per unit। तो इसको हम EOQ के ऑर्डर से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसके हिसाब से निकालते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एनुअल रेट ऑफ यूजेज जो है वो 30,000 यूनिट्स यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेस जहाँ पर रखते हैं वो $10 आती है, और एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट 8% इसका कॉस्ट लगता है इन्वेंट्री मेंटेन करने, और कॉस्ट पर यूनिट जो है $1.80। ये फॉर्मूला आपने लगाया, ठीक है, तो आपके पास है 2040, ये आपकी क्वांटिटी आ गई कि इतनी इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी 2041 यूनिट्स अगर material management, GIT, very important. Just in time inventory systems are designed to minimize inventory at the production facility। जस्ट इन टाइम का मतलब है जब डिमांड आए मार्केट से, जब आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें और फॉरन बना फॉरन जीआईटी कहलाते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI involve computer to computer transmission of the data and business documents, shipping and receiving orders between the buyer and the vendor। इसमें LC खुलती है, लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे करते हैं, उसके बाद उसकी इंश्योरेंस होता है, FOB या CIF, सारी चीजें होती है, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, बैंक से पैसा ट्रांसफर होता है। पहले मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपनी जो बायर होता है वो अपने बैंक में यहाँ पाकिस्तान में पैसा रखाता है कि उसको खरीदना है अमेरिका से,
फिर इस बैंक में जब उसका पैसा आ जाता है तो बैंक कंफर्म करता है, अमेरिका में जो बनाने वाले मैन्युफैक्चर उसके बैंक को कंफर्म करता है, तो दोनों बैंक कहते हैं हाँ बैंक उस बैंक में पैसा आ गया है, और इस बैंक को इन्फॉर्म किया है यूएसए के सिटी बैंक को, फॉर एग्जाम्पल। फिर ये पाकिस्तानी बैंक मैन्युफैक्चर जो रॉ मटेरियल मंगा रहा है इसका ये पैसा ट्रांसफर करता है डॉलर की शक्ल में अमेरिकन बैंक पे। फिर अमेरिकन बैंक वाले एश्योरेंस लेते हैं उससे, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो गई है तुम्हारी, तो इनको शिपमेंट करो, जब शिपमेंट चलनी शुरू होती है तो ये पैसा फिर पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, वो शिप निकल जाता है पोर्ट से। ये सारा प्रोसीजर है। वेंडर वेंडर एनालिसिस, द वेंडर बेचने वाले कौन है, क्या कौन सी पार्टी है, इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेसेस क्या है, सब चेक करते हैं। इंटरनेशनल सोर्सिंग, रॉ मटेरियल और कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं मटेरियल, तो हमारे पास कम से कम, मेरे पास जो प्रॉब्लम था तो मेरे पास 120 की लिस्ट होती थी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, कि जो जो वेंडर्स है कौन कौन बेचता है, कहाँ कहाँ से बेचता है, और अगर एक ना दे तो दूसरे से प्राइस वेरिएशन को भी आ रही है। This is all for today. नेक्स्ट में हम मार्केट पर्सनल सेलिंग पढ़ेंगे, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है मार्केटिंग का और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का। पर्सनल सेलिंग पार्ट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आती है, तो उसमें जो मेडिकल लैब्स रखे जाते हैं, those people they go to the doctors and convince them to sell their product. इसके अलावा पर्सनल सेलिंग में दे मेडिकल लैब्स also go to the wholesaler and retailer to sell the product or discuss the product. तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ।